Hello, welcome to Pinto Physics YouTube channel. I will start a fundamental differential functions of physics. I will start. Let us suppose that let y equals to e to the power 10x plus x square. Then how you differentiate? First of all, we see that the exponential function of the power of 10x plus x square. That means trigonometrical function and algebraic function. तो y के रिस्पेक्ट में आप पहले क्या कीजिए, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर उसके पावर को डिफरेंशिएट कीजिए. तो देखिए डिफरेंशिएट ऑफ y with respect to x dy by dx equals to dy dx e to the power 10x plus x square. अब डिफरेंशिएट dy by dx equal e to the power 10x plus x square dy dx. पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट उतना ही हुआ, फिर आप जब पावर का करते हैं तो 10 का x स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट another example of exponential function. ये नेक्स्ट एग्जांपल है 6. लेट y is equal to, अभी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन चल रहा है. देखिए कि e टू द पावर, लेट कर लीजिए e टू द पावर 5x square plus 2x plus 1. How you calculate differentiate of y? Differentiate y with respect to x. Differentiate y with respect to x जब करते हैं तो देखिए आप x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आप पावर का कीजिए. ठीक है, स्टेप फर्स्ट ऐसे कर सकते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड. dy differentiate of y with respect to s, dy dx y is equal to dy dx e to the power 5x square plus 2x plus 1. Okay, differentiate, then exponential function of a differential function is exponential and e to the power 5x square plus 2x plus 1. And now step second, differentiate of exponent and they have power, that means dy dx 5x square 2x plus 1, then e to the power 5x square plus 2x plus 1 into 5 into 2x plus 2 into 1 plus 0. Here constant function, कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है, रिजल्ट 0 देता है. यहाँ पे देखिए x का 1 दिया तो अब रिजल्ट क्या आ गया, 5 टू जा 10x प्लस 2 into e to the power 5x square plus 2x plus 1 dy dx dy dx. Okay, now next case, now I will take next case. If
variable is the power of constant is the power of variable. Then how you calculate? Here case फोर्थ लेट कर लेते। देखिए अगर if constant is the power of variable, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो तब विच फॉर्मूला अप्लाई। देखिए कि सिग्निफिकेंस के लिए देखिए एग्जांपल x to the power 5, x to the power 9 by 2, x power 1 by 2, x की पावर 7 by 8, different types. Then how you differentiate? First of all, these types of example you apply. I will apply below formula here. Let here differentiate of x. ये देखिए ये इनसे मैच कर रहा है, दिस मैच, बट दिस n इज द नॉट, ये जो है मैच नहीं करता है x से, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो पावर जो है वो पीछे आ जाएगा, उसमें से एक सबट्रैक्ट हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन में से। तो देखिए n x n माइनस 1, ओके। यहां भी देखिए ये जो आपका एग्जांपल है सिमिलर है, x है उसके पावर अनदर है, नंबर है, कोई अनदर वेरिएबल। तो देखिए कि ये जो है कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये भी कांस्टेंट फंक्शन, वो भी दिस कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपको अनदर इस फॉर्म में दे दे x की पावर 9 के फॉर्म में दे दे, तो सिमिलर दिस सेम सेम। तो देखिए ले लीजिए क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर 5, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y with respect to x। देखिए dy dx y is equal to dy dx x to the power 5, dy dx equals to पावर, कोएफिशिएंट पीछे आएगा, x to the power पावर जो है वो पीछे आएगा वेरिएबल के, और 5 में से 1 घटा दीजिए तो 5x to the power 4। Another example I will take, let y is equal to let y is equal to x to the power 9 by 2, then differentiate y with respect to x, differentiate y with respect to x, so dy dx is equals to dy dx x power 9 by 2
differentiate dy dx equals to constant function जस्ट वेरिएबल के पीछे और x वेरिएबल में से एक आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 9y2 x के पावर 7y2 dy dx another another एग्जांपल देख लेते हैं let y equals to let y equals to x to the power 7 by 8 differentiate y with respect to x differentiate y with respect to x we get dy dx y dy dx x bar 7y2 7y8 here differentiate dy dx equals to constant function 7y8 पीछे आगे 7y8 में से 1 रेस्ट कर लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 7y8 x to the power 7 minus 8 upon 8 that means 7y8 x power minus 1y8 dy dx dy dx okay now another case if two different functions are in the product form then how you calculate a differentiation if two different functions are in the product form that means u and v then how you calculate a differentiate of these types of function now another example now if two different function if two different function are in the product form here example dy dx u into v then how you calculate both different function here first function I will catch second function I will leave another similarly first function I will leave u second function I will catch dy dx plus second function I will leave next previous function I will catch v d upon me dx
So u dv by upon dx plus v du upon में dx. That means dy upon dx u dot v. Next, here example x sin x x log x e to the power x log x. Then how you calculate a differentiate when two different functions are in the product form? जब दो different function product form में होता है तो आप कैसे differentiate करें? देखिए वन बाय वन. Let y is equals to x sin x. Here differentiate y with respect to x. Differentiate y with respect to x dot sin x. With respect to x dy upon में dx y d upon में dx x sin x. First function I will leave. Second function I will catch. X dy dx sin x plus sin x dy dx x sin differentiate of sin function cos x plus first sin x differentiate of x, we will get the result of 1. So dy dx फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकेंड को पकड़िए, फिर प्लस ऑपरेटर लगाइए, फिर सेकेंड फंक्शन को छोड़ दीजिए, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए. नेक्स्ट एग्जांपल x log x. Let y equals to x log x. Differentiate y with respect to x dy upon में dx y is equals to d upon में dx x log x. D upon में dy dx equals to x outside d upon में dx log x plus log x outside and another function differentiate x. Then x log x 1 upon में x plus log x differentiate of x 1. That means
dy dx cancel out 1 plus log x. Next example I will see. Let y is equal to power x log x. Here logarithmic and exponential function both are here present. Logarithmic and exponential both functions are present. Then how you calculate? Similar u and v apply. Differentiate y with respect to x. We get d upon me dx y is equals to d upon me dx e to the power x log x. Here exponential function outside dy dx log x plus outside log x and previous function I will get dy dx e to the power x. Here e to the power x dy dx 1 upon x plus log x into exponential function. I will also get the result of exponential. So my result e to the power x upon me x plus e to the power x log x dy upon me dx dy upon me dx dy upon me dx. Now next case, if two different functions are in the form of numerator and denominator, then how you calculate differentiation? Here, case fifth, if two different functions are in numerator and denominator for d upon me dx u upon me v, then फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेते इनको u by v
डिनोमिनेटर फंक्शन को हम छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए भी डी यू अपॉन में डी एक्स माइनस, अब हम डिनोमिनेटर फंक्शन को छोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। भी अपॉन जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। दैट मीन्स भी डी यू अपॉन में डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन में डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर डी यू अपॉन में डी एक्स। I will take these types of example. Here, let y is equals to, first example, x upon sin x. Okay, then how you calculate? First of all, here both functions, here both functions are numerator and denominator. So this formula is applied. डिफरेंशिएट y, हियर x का फंक्शन है तो आप डिफरेंशिएट भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, देखा जाता है उसका वेरिएबल क्या है। तो देखिए डिफरेंशिएट y with respect to x, we get d upon dx, y is equals to d upon में dx, x upon sin x. Here concentrate, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को आप छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को आप पकड़ लीजिए। देखिए sin x, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को आप क्या कीजिए, यह भी किए थे, ये तो u हो गया, ये भी हो गया, माइनस ऑफ u फंक्शन को लीव कर दीजिए। dy dx sin x, sin x in this upon v स्क्वायर, तो v स्क्वायर sin x का होल स्क्वायर। देखिए तो क्या होगा, sin x, x का डिफरेंशिएट कीजिए 1 माइनस दिस x, sin का डिफरेंशिएट cos x अपॉन होल स्क्वायर sin x का होल स्क्वायर। दैट मीन्स sin
x minus x cos x upon sin x का होल स्क्वायर dy dx. Okay, next another example. Let y equals to x log x, here algebraic, here logarithmic. Then similar formula apply. Differentiate y with respect to x, we get d upon me dx y, d upon me dx x log x. डिनोमिनेटर फंक्शन को छोड़ दीजिए, log x, इनको u मानिए, इनको v मानिए, v को छोड़ा, u को कैच कीजिए, माइनस ऑफ u को छोड़िए, डिफरेंशिएट कीजिए, log x डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को क्या कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए. तो क्या देगा, log x 1 माइनस x log x का 1 by x अपॉन log x का होल स्क्वायर. ओके, it cancel out, log x minus 1 upon log x का होल स्क्वायर, dy dx dy dx. आगे नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं. जब हमारा वेरिएबल इज द पावर ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल इज द पावर ऑफ कांस्टेंट, या कांस्टेंट इज द पावर ऑफ वेरिएबल, logarithmic is the power of variable, trigonometrical function of the power of variable is the power of trigonometrical function, then how you calculate a differentiation. Okay, ये सब फंडामेंटल है जो आपको फिजिक्स में कभी कभी काम देगा. ये चीजें सब आती रहनी चाहिए. केस 6, if a function, if a variable is the power of variable, या variable is trigonometrical function is the power of variable, trigonometrical
function is the power of variable logarithmic function is the power of variable. Exponential is the power of variable. Variable is the power of exponential. Variable is the power of exponential. Then how you calculate? That means this types of जो फंक्शन होगा उसमें आपको लॉगरिथमिक लॉग अप्लाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? लॉग अप्लाई आपको करना पड़ेगा. दिस टाइप्स ऑफ दैट मींस एग्जांपल देख लीजिए कैसे सिग्निफिकेंस करें. ये सिग्निफिकेंस ठीक है आंसर. देखिए कि अगर आपका एग्जांपल x to the power x to the power sin x e to the power x का पावर sin x sin x अपॉन होल का पावर x या log x power x या two or more than two different function are in the product form. Two or more than two function are in the product form. Then apply logarithmic function. Take up both sides. X tan x sec log x e to the power x. Then here different types of function are in the product form along with. Then apply. Then we can apply both sides log and differentiate. हमें क्या करना है? अगर ऐसे फंक्शन देखेंगे तो हमें क्या करना है? उन्हें लॉग लगा करके डिफरेंशिएट कर देंगे. देखिए कैसे करते हैं. How we will calculate first of all, let y is equal to x to the power x. Then differentiate y with respect to x. Differentiate y with respect to x. D upon me dx y is equal to d upon me dx x to the power x. Then apply not direct differentiate. Taking both sides, taking log both side, reject log y equals to x log x power
आपका पीछे आ जाएगा, इसके साथ बेस के साथ लॉग लग जाएगा। अब डिफरेंशिएट कीजिए दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय x dy dx log y is equals to d upon में dx x log x here 1 by y dy dx equals to फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन। अब क्या होगा 1 by y dy by dx x ये क्या होगा 1 by x प्लस log x का डिफरेंशिएट 1 क्या हो गया 1 by y dy dx इक्वल टू 1 प्लस log x dy dx इक्वल टू क्रॉस कर दीजिए y इंटू 1 प्लस log x then dy dx equals to put the value of y here from equation first, so it is x to the x 1 plus log x ओके। आज इसी क्वेश्चन पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट डे इसी क्वेश्चन के बाद हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे, आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बाद जो है उसका डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपका ट्रिगोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होने के बाद आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम आपको कैलकुलेट करके देंगे। तो इन दिस टाइप से आपका जो बेसिक है डिफरेंशिएशन वो आपको कैलकुलेट करके दे देंगे, जो आपका फिजिक्स में आपका काम दे, और फिर हम जो है आगे की ओर फिजिक्स में बढ़ते चलेंगे। सो थैंक यू all of you।